today's session. I welcome everybody. Thank you for all joining and being with me. It's our fourth session today about a positive parenting and behavioral approach towards it. Now, this entire thing that we have, this entire session that I have prepared is based on one of the most successful. I would please request everybody to mute yourself. Please mute yourself. Please mute yourself. Please mute yourself. Yeah. So, this entire theory or the entire 8-part webinar which I have built is based on a very successful webinar which was made for most of the professionals and parents who are working in the field of neurodiverse children. We name them neurodiverse because some of them are having ADHD, some of them are having ASD, some are along the spectrum, some are high functioning ASD. So, some want to name their children, some do not want to name their kids. However, what they are neurodivergent. There's a new term coming, neurodivergent, where they're having different characteristics. Their learning styles are different. Most of the children have different learning styles, and however, there is a certain consistency among the so-called what we say as normal children. However, with certain children, the learning strategies could be different. As parents, we need to adapt these strategies. We must change our approach in teaching them. Therapists do their job, and therapist always does the best for the kid. However, as last time Dr. Darshan also doctors who are of all generations, all participants as parents to take care of your children, to get therapy, work with them. Every therapist you about what is to be done and it has carried forward at home. Now, the way you would approach this, way you try to teach your child, the way is your approach. That builds up esteem of your child. Apart from learning, apart from anything, the child's self-confidence, the child's self-esteem is in our hands. And I would say that even if the child learns a little less today, but let me hold my child a little higher, a little more, more confident or more upper level. In this case, I always want to share one very beautiful story of Thomas Alva Edison's mother. Now, he used to ask a lot, Edison used to ask a lot of questions at home. He used to constantly keep asking to his children, to his teachers. So one day he actually overheard his teacher telling the inspector he is adult and it would not be worthwhile keeping him in the school any longer. This upset Edison so much, he went and told his mother about it. Now, his mother's love was aroused and the pride in her son was also wounded. She took Thomas back to school and gave the teacher a piece of her mind and told he didn't know what she didn't know what she was talking about, and her son had more brains than she did. Her mother decided to educate her son at home. She had been a teacher and saw the potential in Thomas, said the mother. She was the most enthusiastic champion he ever had. So a parent is the first and the foremost participant of therapy, participant in learning, a positive approach towards learning of any child. Today, I have seen or I have met a lot of parents who actually end up getting irritated, are upset over the diagnosis. Sometimes I have also seen, out of, I wouldn't say all, but out of the 10 parents that I see, out of that, at least 3 to 4 parents, I've seen them actually hitting in my premises, in my center. And then I have to be so strict with them about this whole hitting process and, getting upset with them. Just that their learning styles are different. We may not know, there's a very famous saying in LD also.
I may not know the way I need to learn, but please try to teach me the way I can learn. So today my main aim is to teach you a proper and appropriate approach towards positive parenting, in terms of teaching, in terms of disciplining the child. There are times when family says, you've not been strict, or you're not being firm, or you're not being, as a mother, you've not been, taking care about it, or you need to be more perfect. But what is perfect, we never come to know. Even I am not perfect. So how do we make changes in our positive parenting attitude? How do I make changes in the way I approach my child? I hope we will learn today from Ms. Poonam Agarwal. Ms. Poonam has been my associate last 20 years. We've been together. We've been together in Drishti. We've worked a lot. We've been head of department for a very well-known institute called Drishti. She has been a pioneer in entire constructions of a very well-known institute, extensive counselor, extensive, developmental psychologist. She's RCI approved too, and she does all the testing at our places in development also. So today we learn a lot from her. And how do I do my best in parenting? How do I best teach my parents to be the best champions of our children? I invite you to tell about yourself. Okay, thank you, Chandlata. I don't think I need to say anything more. You've said a lot. So let's start with it by just the basic. It's there. It says behavior approach and positive parenting. Throughout, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगी, so that कहीं कुछ किसी को कोई भी concern हो language का, तो it will not be a problem. That's one. हम यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर किसी को कोई parenting नहीं सिखा रहे हैं. You are the best parent and you will be the best parent. There are certain approaches जो हमें best से भी और best बनाता है, and that is what we need to keep in mind. First, most important thing, हमें ये चीज़ समझनी है कि a child is not special child or anything of that sort. It's just different. ये एक first है, and second, as Ms. Chandlata said, that it's the neurodivergent करके जो अभी concern आ रहा है, because all these issues जो कि ADHD है या autistic spectrum disorder है या sensory processing disorder जो आपने first session में सुना आपने डॉक्टर का, it is all about the neurological disorder. हमारे जो neurons होते हैं हमारे दिमाग में, वो बहुत कुछ अलग अलग चलते हैं. So even as child, if you look at your own self, आप भी शायद एक hyperactive या बहुत ज़्यादा inattentive या बहुत ज़्यादा aggressive child रहे होंगे, and over the time we also tend to mellow down. Now let's start with something which says यहाँ पर very clearly बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कुछ लिखा होगा. I don't have too much of pictorials, but most of the text जानी चाहिए. That's very important. Now, it is all about changing your mindset. जब हम ADHD की बात करते हैं, अरे इसका बच्चा ADHD है या इसके बच्चे को कोई sensory issue है, it is all about changing your mindset, your thought and your actions the moment you get to know your child's diagnosis. क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे negative emotions आते हैं. कोई भी चीज, अगर हम बेसिक डायबिटीज या कोई एक हाई ऑर्डर डिसऑर्डर, अभी जैसे टीबी है, कैंसर है, अभी जैसे कोरोना चल रहा है, अगर आप इन सब चीजों के बारे में जैसे ही सुनते हो, आपके अंदर सबसे पहले एक नेगेटिव फीलिंग आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग या एक हैप्पी वाली फीलिंग नहीं होती है. सो दैट इज व्हाट द माइंडसेट इज ऑल अबाउट. यस, इट इज लाइकली कि नेगेटिव होगा, but then again you have to create it and make it very positive. So what we talk about is that हमें आज throughout the session हमें दोनों aspects को देखना है. एक, हमारा बच्चा कैसे देखता है चीजों को, और एक हम कैसे देखते हैं चीजों को. जब हम दोनों चीजों के एस्पेक्ट्स को समझेंगे, तभी हमारी थेरेपी, हमारा प्रोग्राम, जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं बच्चे के साथ, that will work better. So it talks about difficulties faced by the child at home and at school. We need to keep that in mind. हमारे child की feelings क्या रही हैं. हमें लगता है बच्चा बोलता नहीं है,
अरे बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप बोल रहे हो बच्चा बोलता नहीं है, टीचर बोलती है बच्चा बोलता नहीं है, but what about the child? What is the child feeling? Right? So it's about child's feeling. The parents' role, we as parents have to be very optimistic. We have to have a lot of confidence when it comes to our child, क्योंकि हम बच्चा grow कर रहा है, हम बच्चे के साथ grow कर रहे हैं. There has to be a lot of joy involved in the whole process, and the possibility that there is a possibility. ऐसा नहीं है कि you cannot have changes or you cannot have therapies, or it's not that the बच्चा change नहीं होगा. होगा. Yes, it depends on when the diagnosis is done, when the treatment has started, कितना time हो गया है. Longer the time in acceptance, the longer the time in the therapy treatment. The earlier the identified, the earlier the therapy done, the earlier the intervention done, आपको effect भी जल्दी दिखेगा. That is why we say early intervention is the best thing that happens. Now, as per statistics, बहुत देखा जाता है कि मेल इज टू फीमेल का रेशो, चाहे कोई भी डिसऑर्डर हो, वो ज्यादातर 4:1 है मेल्स और फीमेल्स में. And that is why throughout the program, जो कि आज का हमारा behavior approach है, we are going to focus on customized program. There are few programs that we are going to talk about, so that it gives you an idea that कि अगर आप वो प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप वो प्रोग्राम सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. It so happens that sometimes हम step 1 करते हैं और step 2 half achieve होता है, step 3 पे चले जाते हैं. ऐसा नहीं है. Behavior approach में आपको सारे steps बराबर से complete करने हैं. Another thing is we need to pay attention कि हम अपने दे रहे हैं, जो कि हम बोलते हैं executive functional training. That's one. क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा बच्चा थोड़ा focus करे, थोड़ा concentration करे, थोड़ा चीजों को स्पीड बढ़ाए, अपनी खुद की एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग करे. They can't hear me? No. Yeah, but there's a lag coming in. So if you could, Yes, ma'am. The voice is cracking so much in between. Actually, the voice is cracking so much in between. Yeah, the voice is cracking a lot. But just यहाँ it is just try. यहाँ पर बहुत normal दिखा रहा है. Okay. Just I don't know. yeah, I'll try. I'll sure go a little slow. Yeah, no, don't go slow. Just come near to the chair and probably hold. Don't move the mic much. No, I'm not moving the mic. I think now it's okay. There is a lag, Poonam. Is that okay? It looks like a network issue. Can you hear me properly? Yeah, this is now okay. Can you hear me? This is okay? Yes. I don't think it should be an issue, but let's see. Let's work this out. Perfect. Okay. If there's anything, you can just raise your hand, Chandlata, or you can just say something or whatever it is. You can just stop me in between. Yeah. Okay. Yes. So we were talking about the execution function and the self-regulation part. यहाँ पर we are actually saying that कि हम बच्चों को कैसे functional बना सकते हैं in terms of activities of daily livings भी होता है depending on the child's concern. क्या disorder, क्या diagnosis है, and accordingly बच्चा independent बने. So that's the training program that needs to be done on a regular interval. Now, what do you mean by this regular interval? Regular interval का मतलब होता है depending upon the age. जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा 1 साल का हो गया तो चलने लगा है, 2 साल का हो गया तो उसकी अप्रोक्सीमेटली इतनी स्पीच डेवलप हो चुकी है. ठीक उसी तरह we have to figure out that as per the age, 5 years, 7 years, 10 years के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंटल स्किल्स बच्चों को आ जानी चाहिए. जैसे हम बोलते हैं ना एक सर्टेन एज पे बच्चे को लेस बांधना आना चाहिए या टॉयलेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ठीक उसी तरह these kind of trainings are very important. Now, let's start with the fact which says that don't mistake your child's ADHD or any kind of symptom as bad behavior. कोई भी behavior bad behavior नहीं होता है, right? उसका जो सिनेरियो है, हम जैसे बोलते हैं ना कोई इंसान बुरा नहीं होता, it is the scenario which then leads the individual to behave in that way is an error to it. ठीक उसी तरह, so we need to understand that कि
हम as parent, that is trust the top expert on your child, that is you. It is you who knows your child the best. आप हमारे पास बच्चा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करें तो बच्चा हमारे पास at the age of 3, 5 or later when it is diagnosed by the school comes very late. But by till that time the child is with you. बच्चा आपके साथ है, राइट? सो यू नो द इंस्टिंक्ट, यू नो योर इंट्यूशन कि बच्चा क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है. अगर आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है और आप कर रहे हैं, you are the best judge. So you actually help us a lot. Second, it is not a bad behavior. It is what we need to understand कि symptoms क्या है that cannot be controlled. What are some of the symptoms that are not controlled? यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा भाग रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना, हम उसको मॉल में लेके जाते हैं और बच्चा भागता रहता है. Now, what is it that I need to take care of? That he runs a lot. That is the area. Any kind of disorder or difficulty that is, it's a neurological, genetic, medical disorder that imbalances the brain. And that is why जब आप कुछ बोलते हैं बच्चे को तो वो attention पे नहीं कर पाता है, वो ध्यान नहीं देता है. Because we as parents, we as adults, we as therapists at times बहुत सारे commands हम बोलते हैं एक साथ, और हमारा बच्चा एक साथ बहुत सारे commands नहीं ले सकता है, and he goes very step by step. So that is what we need to take care of. Your child is not bad and you are also not bad. But ये एक वो टेंडेंसी होती है कि बच्चा बैड है क्योंकि मेरी पेरेंटिंग की वजह से, तो वो एक एस्पेक्ट हो सकता है. I hope it's clear, or still it is cracking. It's not cracking, a bit slow. Okay, so that's okay. Let it be that way. Then I'll pick up a little faster. So No, be a bit slow. I meant to say you're fast. okay, done. Be So a bit slow. I think it's going to take some time for them to process, neurological, genetic, medical disorder, Okay. imbalances. So you need to be a bit slow. ठीक है, done. Okay. So next is about rewarding your child for better behavior. Now research have shown that कि higher performance, अगर कोई भी अच्छा behavior आपको inculcate करना है बच्चे के अंदर, the more you reward, the more you take feedback, the more you give feedback, the better it is. The performance will be better, behavior will be better. So बहुत जरूरी है कि you need to identify. ये जब हम बात करते हैं, इससे पहले आपने ऑलरेडी अपना होमवर्क कर लिया होता है कि कौन से बिहेवियर्स हैं जहां हमें रीइंफोर्स करना है, कौन से बिहेवियर्स हैं जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स हैं जिनको हमको हेल्प करना है बच्चे को, and there are certain behaviors which you know that child is good at. So we'll talk about those kind of things as well later. But yes, rewarding is important. Any kind of reward, it could be verbal reward. Verbal reward is something which lasts a long. Materialistic rewards जो होते हैं, जैसे कि हम चीजों की बात करते हैं, that is very temporary in nature, that can also have side effects. But yes, verbal rewards at the right time is very important. And feedback जो आप देते हो, and feedback आपको बच्चे से भी लेना है. Feedback taking from the client बच्चा is also very important. Sometimes आपको देखा होगा आपने पूरे conversation है ना, sometimes your child says कि मम्मी आप बहुत ज्यादा बोलती हो. ये चीज आप धीरे से भी बोल सकते हो. पापा, why are you not listening to me? This is a feedback that you're getting from your child, but actually उस वक्त हमें realize नहीं होता है. So this is the clues that you need to understand that hello, I want, the child say, please listen to me, or speak softly. I understand what you're trying to tell me. Another thing, anything appeals to your child works with your child. So be it ADHD, ASD, or any kind of disorder, it works. So जो आपके बच्चे को अच्छा लगता है करना, which you need to figure out कि exactly उसको अच्छा लगता है, which he feels happy, and it is an enjoyable situation for him, it gives him pleasure, that needs to be done. Now, very often parents come and say हमारे बच्चे को तो सिर्फ खेलना और सिर्फ टीवी देखना पसंद है. Now उसमें भी हमें देखना है कि टीवी देखना और खेलने में भी क्या exactly चीजें हैं that will work for my child in the later strategies that I'm going to use. Next, criticizing bad behavior worsens the symptoms. सिम्टम्स हमें सब पता है, बच्चा इम्पल्सिव है, लाइन में खड़ा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, आई कांटेक्ट नहीं करता है.
आप जितना ज्यादा उस बिहेवियर को क्रिटिसाइज करेंगे वो उतना ज्यादा वो बिहेवियर बढ़ेगा. Parents can change their own bad behaviors. You need to realize as parents. Now, when we say parents, it is never a one role. It's not a mother's role, just the father's role. It is a combined role. So ऐसा नहीं है कि मदर अगर एफर्ट डाल रही है और फादर एफर्ट नहीं डाल रहा है तो it's going to work. It's really not going to work. It will go very slow. So both the parents have to work together in this whole process. So you need to avoid overly critical statements हो सकते हैं, actions हो सकता है, behavior हो सकता है. Whatever you feel that needs to be changed in yourself. SAIL is one of the strategy that you need to keep in mind. You can make a note of it. It says you need to identify the list of annoying behaviors. Behavior is not bad, it's just the symptoms. मैंने जैसे बताया कौन कौन से behaviors हैं जो आपको annoy करते हैं, ये आपको annoy करते हैं. So अगर आपका बच्चा for example अगर sensory issue है तो उसके पहले symptoms जानिए, फिर उसके बाद देखिए कौन से behaviors annoying हैं. Similarly for ADHD and ASD you need to understand कि पहले ADHD के symptoms क्या क्या हैं और उसके बाद उसके कौन कौन से annoying behaviors हैं जिससे आप disturb होते हो. Another thing, either ASD or any neurological disorder is a medical condition and it's not a behavior problem. So it is just a medical condition. It's absolutely fine. छोटे बच्चों में ADHD आपको दिखेगा. Yes, ASD अगर है, then it stays for a longer period of time. It is also at times lifetime. But yes, for ADHD, it's not just, it's just that it stays and then as the child grows, it fades off. It fades off. So ऐसा नहीं है कि ADHD नहीं रहेगा, but ADD हो सकता है. That is attention deficit disorder. But छोटे बच्चों में आपको hyperactivity ज़्यादा दिखती है. It's okay if the child shows the behavior, it's not a big deal. As parents, हम भी tantrums throw करते हैं. We also shout at people. So if the child does it, it's absolutely okay. So you need to accept that fact that yes, ये कुछ symptoms हैं मेरे बच्चे के, which is difficult for him to handle. बच्चा नहीं handle कर पा रहा है, so it's okay. And last, as I said, listen to your child. Your child can help you when you help your child. So you need to listen what exactly it is. There's an additional L which says let go. बहुत सारी चीजें हैं जब हमारा बच्चा हमें डॉक्टर बोलता है, डायग्नोस करके देता है, चाहे वो साइकाट्रिस्ट हो या पीडियाट्रिशियन हो या कोई भी और पैरामेडिकल फील्ड के प्रोफेशंस होते हैं जैसे स्पीच ऑक्यूपेशन या साइकोलॉजिस्ट. तो इट्स ओके इफ दे गिव यू अ डायग्नोसिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड एंड देन बहुत सारी चीजें होती है जो लेट गो करनी पड़ती हैं. So this is the SAIL strategy that as parents we need to keep in mind. Now, neurodiversity, as it's been said, it could be any disorder. So we are just going to talk about a combination of all. So I really don't know the population के सबके बच्चों का क्या issues हैं, नहीं है, क्या है. But yes, if it is there, it might be in one of these. If it's not there, still it's okay. As a parent, you will learn a lot. So neurodivergent child does not mean they can't learn. Just because बच्चे को learning disability है तो बच्चा learn नहीं कर सकता है या उसको maths नहीं आता है तो उसका exemption हो गया है. It's just that they learn differently. Every child learns differently. The same goes with a normal functioning child. ज़रूरी नहीं है कि child A and child B have same learning strategies or same learning techniques. One might be auditorily very good, the other might be visually very good. So it all depends. Next, as parents, how we as parents can strive when raising a child who differs from the mental picture we painted before birth. क्या होता है ना कि हमारे जब भी हमारा बच्चा पैदा होने वाला होता है या हमारा बच्चा पैदा हो चुका होता है तो हम अपनी एक पिक्चर बनानी शुरू कर देते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, अभी ऐसा है, थोड़ा बड़ा होगा तो ऐसा होगा. तो हम एक पिक्चर पेंट कर लेते हैं अपने दिमाग में. बट जिस दिन वो पिक्चर हमारी टूटती है, हमारा बच्चा उस फ्रेमवर्क से कुछ अलग होता है, it becomes very difficult for us to handle the situation, which is right. We need to understand that yes, हर एक इंसान के अपने dreams, wishes, desires और एक पिक्चर होती है हर एक इंसान एक बच्चे के बारे में. But when that breaks, yes, it is very heartening, it is very difficult. इसीलिए हमने सबसे पहले कहा, you need to express and accept your emotions.
हम खुद ही अपने इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम डिनायल में, रिफ्यूजल में और बहुत सारी ऐसी चीजों में चले जाते हैं, बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. Yes, initially कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, but yes, you have to give time, you have to give space to move with your emotion and then slowly and gradually accept that yes, this is what the concern is. I'm not saying this is what the diagnosis is or this is what the disorder is. वो बहुत बात की बात है, but yes, initially हमें सबसे पहले वो देखना है कि in terms of emotions हमारे and also in terms of कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए एज अ पेरेंट, हमें खुद को भी थोड़ा टाइम चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए कि हमारे बच्चे का कंसर्न क्या है, whether it's a speech concern or it is an auditory concern or it is an ASD, अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि ये तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में फॉल करता है या लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे की. सो अकॉर्डिंगली one needs to be accepted. Second, you need to go through that emotion. You have to live with that emotion for some time and then move ahead by asking lot of self-reflection questions. जैसे मैंने लिखा है, will guide you to explore feelings of isolation, frustration, and then it will help you to work on certain strategies. अगर टाइमली आप अपने आप से सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, then definitely you will come back into this vicious cycle of positive negative emotions. जब आपके emotions positive negative होते हैं, that starts reflecting on your child. आपके बच्चे को भी पता चल जाता है कि मुझ में कमियां हैं, and the child also starts accepting the fact that yes, मैं कमजोर हूं. And that is where when we talk about कि उसका self esteem बढ़ाओ, वो confident नहीं है बच्चा, because वो जो सुन रहा है या वो महसूस कर रहा है या आप जो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, उसको फीलिंग्स गेट ट्रांसफर्ड विच इज नॉट सीन. फीलिंग्स अंदर की होती हैं. हमारे अंदर जो डर होता है ना, वो हमारे बच्चे में को उसको समझ में आ जाता है, छोटे से छोटे बच्चे को समझ में आ जाता है. तो बड़े बच्चों को तो बहुत आसानी से, वो उनके अपने डर होते हैं, हमारे अपने डर होते हैं. सो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, because that will help you to move towards a proper strategy taking process. Now, neurodiversity का जो हम बात कर रहे हैं in terms of step by step planning, इनका एक step by step plan होता है for parents in diagnosis denial. If you have moved out from this phase also, that is, if you have accepted it that yes, my child has a particular ABC kind of a disorder or a diagnosis, this still will help you. Why? Because you've moved from that phase and you can apply this. So how does it go? One, as I said, the process and accept your child's diagnosis. Don't jump to actions. What we can't do, what we don't do is accept, pause and think. That is what is required. So you need to figure out कि अब जो हम processes पढ़ रहे हैं, आपको समझना है कि where you stand. Am I at the acceptance level? Am I at the pause level? Am I at the thinking level? Am I asking regular questions to myself? Because I'm moving with my child. मैं उसको therapy दे रहा हूँ, मैं उसको treatment दे रहा हूँ. So how is that? Goals क्या हैं हमारे? It has to be very changing के पर्पस में होने चाहिए. स्टॉप फाइटिंग हु योर चाइल्ड इज, यू नो, वो ये है या वो है, ये डायग्नोसिस है. यू नीड टू स्टॉप फाइटिंग बिकॉज इफ इट्स देयर, इट्स देयर. नाउ यू नीड टू फाइट विद दैट एंड मूव ऑन. नाउ सी योर चाइल्ड थ्रू द स्ट्रेंथ बेस्ड लेंस. दैट मीन्स अवॉइड डेफिसिट बेस्ड अप्रोच. उसके डेफिसिट्स को मत देखिए. आपने एक बार देख लिया है, आपने उसको डायग्नोस कर लिया है, आपको समझ में आ गया है. Now, अब आपका जब प्लान ऑफ एक्शन होता है, उसमें हमेशा स्ट्रेंथ बेस्ड लेंस होनी चाहिए. Your approach towards your parenting has to be that way. You need to learn how to talk to your child's strength. आप अपने बच्चे से अपने उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में कैसे बात करते हैं? खाली ये बोलना, oh you're good at it, तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं. That's a very general statement. You need to specify the behavior, you need to specify what the child has done, and you need to appreciate the child. Right? Now, very important, initial stage में जब हमें कोई diagnosis पता चलता है ना, तब होता क्या है कि या तो हम शेयर करते हैं दूसरों से सपोर्ट मांगने के लिए,
या फिर हम शेयर करते हैं किसी को एक्सप्लेन करने के लिए या दूसरों से एक्सप्लेनेशन लेने के लिए. So avoid doing that. You know it. If you want to share, share only with the support purpose. So if you're seeking support from somebody, then it's great. But if you're explaining someone the diagnosis or the behavior, it's not great. So avoid that. And very important, internalize. Children internalize their message. When you focus on lagging skills, they will feel something is wrong, जैसे मैंने बताया. So एक positive reinforcement पे for every one negative comment. अगर आपने एक negative comment दिया है, which is right, which is required during that time, क्योंकि उस वक्त बच्चे ने कुछ गलत किया है, तो तुरंत आपको उसके बाद identify करना है genuinely that what is the positive reinforcement. यानी उसको प्रेज करना भी बहुत जरूरी है. अगर आपने एक नेगेटिव कमेंट दिया है जो कि उसका बिहेवियर गलत था, तो तुरंत उसके बाद या इन अ स्पैन ऑफ टाइम during the same day itself, you need to find out one positive reinforcement that will motivate the child at least not to do anything but to feel good. Second phase. First phase, जैसे मैंने बताया, it's about process, it's about accepting the diagnosis. Your second phase talks about releasing your fear. As parents, as caretakers, as care, the ones who are into therapy, if the forum has people, it's very important that you release your fear. As parents, हमारा fear निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हमें पता चलता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, हम बहुत लॉन्ग टर्म की सोचते हैं. आगे चल के बच्चा क्या करेगा, पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, स्पीच अभी नहीं बोल रहा है, या अभी उसका इस किस्म का बिहेवियर है, रोज क्लास से कंप्लेन आती है, सो व्हाट विल हैपन लेटर ऑन इन द हायर स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा. दैट्स योर फियर. बट वो फियर जरूरी है, बट एट द सेम टाइम उस फियर को रिलीज करना भी बहुत जरूरी है. In that fear, you need to shift from the fear to the possibility, because every problem has a solution. Every concern has a solution. So that is one. Second, बहुत लोग जो therapy में अभी भी चल रहे हैं, they're already seeking a lot of therapy over a period of time. They have this feeling that कि अरे therapy तो बहुत repeated चल रही है, limited resources हैं, कुछ नया नहीं है, बच्चे में कोई improvement नजर नहीं आ रहा है. One, there are limited, ऐसा नहीं है कि limited resources होते हैं. There are a lot of therapies happening. There is a combination of therapies happening. Sometimes in therapy, there is a lag period. जब थेरेपी आप स्टार्ट करते हो ना, तो एक टाइम लगता है उसको पिकअप करने में, फिर वो तुरंत अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है, यानी कि there's a lot of improvement happening in the therapy. Then after a certain period of time, थेरेपी में एक स्टैग्नेशन आता है. There is a wait period, जिसको हम प्लेटो बोलते हैं, एक फ्लैट ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं. एक वैसा फेज आता है बच्चे का, या थेरेपी में वो आता है, and it is very normal and natural, but that is how therapy works. And then after that, अगर हम थेरेपी उस वक्त हमें लगता है कि थेरेपी वर्क नहीं कर रही है, तो कितने बार जब हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है. बट जो लोग कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, then they will again see an upward shoot. So that you need to understand that yes, with increasing years, there is an availability of therapy with various techniques, various resources available. The love and possibility is something that you need to focus on instead of anxiety-driven decisions. Anxiety, fear बहुत natural है, बहुत normal है, and होना भी चाहिए एक optimum level का. But जब वो थोड़ा excess हो जाता है, तो हमें possibilities नहीं दिखती हैं. हमें सिर्फ lagging areas दिखते हैं, हमें improvement नहीं दिखता है. और हम छोटा बच्चा अगर हमारा एक 5 step भी improvement दिखाता है, तो हमें वो नहीं दिखता है. हमें लगता है कि नहीं, ये improvement नहीं हुआ है, because we are looking at a bigger improvement in the child. Again, I would say use reflexive questions, very important. Keep asking yourself something like, am I moving in the right direction? Am I supporting my child in a proper way, the way my child wants? कितनी बार हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या मैंने सही स्कूल चुना है कि नहीं चुना है मेरे बच्चे के लिए. So
it's like, doubting yourself. Please don't doubt yourself. As parents, as mummy and papa, please don't doubt yourself, because you're the best. You're the best. It's just that आप डाउट करके ना आपने अंदर वो नेगेटिव जो इमोशन होता है उसको आप बढ़ावा दे रहे हो, वो मत करिए. समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आप जब रिफ्लेक्सिव क्वेश्चंस करते हो तो डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज वर्किंग विद द चाइल्ड इन द होम एंड नोबडी एल्स इज सपोर्टिंग यू. बट देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज अगर आपने सोचा है कि आप करोगे, यू हैव टू मूव ऑन. कितनी बार हम स्ट्रगल करते हैं ना अपने आप को कुछ पाने के लिए, बट बहुत सारे लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, बट देन धीरे धीरे वो चीज हो जाती है. समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू डू द सपोर्ट पार्ट, प्योरली उनको लगता है कुछ नहीं होने वाला है, बट जब वो इम्प्रूवमेंट देखने लगते हैं तब उनको चीजें समझ में आती है. सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर यू विल अचीव इट. वर्क टू ओवरकम योर फियर्स. अगर आपने इसको ओवरकम किया है, कन्फ्रंट करा है, एक्नॉलेज करा है, एंड यू आर यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज, very likely that your spouse will also start doing that. Very likely that your family member will also start doing that. Communication is very important. Communication. आपको अपनी फैमिली में, you can't communicate to everybody at the same time, but आपको one member के साथ उनको कम्युनिकेट करके उसको उस लूप में लाना है, सपोर्ट सिस्टम का जो लूप जिसको हम बोलते हैं. And that is how therapy works. When we are doing group therapy, when you're doing family therapy, we cannot convince everybody in the family at one go. We have to work on each and every individual separately. And that is how, when you're looking at support systems, that is how it works. Last is something that हम हमेशा बच्चे की abilities पर कम फोकस करते हैं, उसके इंटेलिजेंस पर ज्यादा हमारा ध्यान रहता है. मार्क्स कितने आए, बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो you need to trust your ability to know that what your child needs, right? So if you trust yourself, you'll be able to trust your child's ability. You need to pat yourself every time that yes, you're a capable, committed parent who has the power to give everything to your child, and you are giving it. आपसे जितना हो सकता है आप करिए. आपको एक्सटेंड करने या स्ट्रेच करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो आप टूट जाओगे. सो प्लीज डोंट डू दैट. डू स्टेप बाय स्टेप, गो स्लो, एंड आई एम श्योर यू विल अचीव आपके जो टारगेट्स हैं. द थर्ड फेज इज अबाउट सेल्फ डिस्कवरी. नाउ एज वी से सेल्फ डिस्कवरी, आप खुद को डिस्कवर करिए, आप बच्चे को हेल्प करेंगे उसको डिस्कवर करने में. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हर बार कि बच्चे को डिस्कवर करना है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करे. आपको पहले अपने स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करनी है, तो आप बच्चे को हेल्प कर पाओगे कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है. सपोर्ट योर चाइल्ड सेल्फ डिस्कवरी, दैट्स वन. गिव योर चाइल्ड द सेल्फ एस्टीम एंड द स्किल. उसको स्किल दीजिए, कौन सा स्किल वो लैक कर रहा है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. इफ यू कैन आइडेंटिफाई, आस्क योर थेरेपिस्ट, ask your doctor, ask your pediatrician, ask your teacher. Ask is something that you need to keep doing it on a regular basis. Wait, think clearly. हर situation difficult नहीं होती, हर difficult में challenges होते हैं, situation में challenges होते हैं, but you need to wait, you need to think, and then you need to move. But it's very natural and normal कि हम wait नहीं करते, हम think नहीं करते, हम पहले action करते हैं, which is normal. But हमें ये reverse तरीका अपनाना है, which is a standard process for you as well as for your child. क्योंकि जब आप wait करोगे तो आपका बच्चा भी wait करना शुरू करेगा. It will take time, but yes, that will happen. Remember that everything is an opportunity for growth. So अगर आपका बच्चा express भी कर रहा है अपने emotions जो अब तक नहीं कर रहा था, it is an opportunity towards growth. He will learn these strategies कि चुप रहना है, line में खड़ा होना है. When your child is actually not doing it and he starts doing it. So the more better you role model, आप एक अच्छे role model बनते हो, बच्चा आप ही को देख के सीखेगा. The fourth phase, which is the last phase, as I said, the first one is about accepting the child's diagnosis. Second is releasing your fear. Third is importance of self-discovery.
And fourth is throwing out everything you assumed about parenting. कितनी बार क्या होता है ना, जब हमें कुछ पता चलता है तो हमें लगता है हमें सब कुछ पता है पेरेंटिंग के बारे में, ये हमें सब कुछ पता है, आई नो इट ऑल टाइप्स. नहीं, उसको थ्रो आउट कर दीजिए. वन, एज आई सेड, एक्सेप्टेंस अगर आ गया हमारा, then we will start questioning everything about our parenting. So वो डाउट जिसको हम बोलते हैं वो मत करिए, थ्रो करिए पेरेंटिंग की जितना आपकी नॉलेज है, and then start gaining more relevant information as per the particular concern of my child, कि मुझे उसमें और क्या जानकारी हासिल करनी है. फर्स्ट, टेक्निकल इंफॉर्मेशन which is important from your doctor or from your therapist, and then move out that कि हाँ, हर एक बच्चे के साथ मुझे कैसे डील करना है. You might have 2 kids in the house wherein one is absolutely fine, no concern, no neurological concern, and the second child has, I would say, let's take it learning disability. I would not take it ADHD or autism, but let's take me a little lighter one. जहाँ दोनों बच्चे रेगुलरली स्कूल जाते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे परफॉर्म करता है, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चा हमेशा मैथ्स में कमजोर है, राइट? वन, एज आई सेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड मैथ्स की डिफिकल्टी है तो कहाँ है सबसे पहले. देन डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ, डोंट कीप डाउटिंग योरसेल्फ कि और या हम नो लूप वाले सर्कल में चले जाते हैं कि अरे मेरे को मैथ्स नहीं आता तो बच्चे को भी मैथ्स नहीं आता. Avoid doing that. That is one aspect to it. Question everything you thought you knew about that parenting. So जब आप question करोगे अपने आप को, बच्चा भी parenting को question करेगा. But जब आप positively उस move step forward करेंगे, तब बच्चे को भी लगेगा yes, my mother knows, my father knows everything about me, and he's actually guiding me towards it. Try to accept and change them rather than truly learn who he is. Who he is यहाँ का मतलब होता है that is वो जो disorder है हम उसको लेके चलते हैं जब हमें पता चल जाता है. Please don't take that disorder with you and walk with the child. You know, adapt it, accept it, and then the change will happen. Change will automatically happen. You don't have to do much about it. But हम हमेशा change पर focus ज़्यादा करते हैं. हमें अडेप्ट करना है, हमें एक्सेप्ट करना है, चेंज हो जाएगा. माइंडसेट जैसे ही हमारा चेंज होता है, इट टेक्स टाइम. विथ प्रैक्टिस इट कीप्स चेंजिंग. इट डजंट चेंज सडनली, एब्सोल्युटली नॉट. इट विल टेक टाइम. सो हाउ डू यू shift in your mindset, thoughts and actions? Something like break free of your limited thinking. You know, अगेन जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा माई चाइल्ड्स लाइफ शुड लुक लाइक दिस. हमारे हर किसी के दिमाग में एक विजुअलाइजेशन होता है कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए. सो इसको हमें ब्रेक फ्री करना है ऑफ दिस लिमिटेड थिंकिंग. हमारी थिंकिंग को एक्सपैंड करना है. बहुत ज्यादा शुड्स, हैव नॉट्स, शुड नॉट्स ये अपनी डिक्शनरी से निकालिए, बिकॉज दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ चैलेंज. नाउ इफ यू आस्क समबडी you should do this to me, जब आप should लगाते हैं, have not, haves, have not, should not लगाते हैं, there's a lot of challenge involved into it. and जब वो इंसान नहीं करता है सामने वाला, आपको बहुत दुख होता है. so you need to remove these words from your dictionary when you're dealing with your child. I would not say remove in terms of when you're communicating to your child. Imagine what's possible, explore सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, बट स्टेप बाय स्टेप. डोंट डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, बिकॉज व्हेन यू डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, जैसे सेंसरी प्रोसेसिंग इशू होता है, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है बच्चे के लिए. आपको लगता है कि हमें स्पीच भी करना है, ओटी भी करना है, आरई भी करना है, रेमीडियल्स भी करना है, काउंसलिंग भी करवाना है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, स्पोर्ट एक्टिविटी भी चाहिए. सो व्हेन देयर आर टू मेनी थिंग्स, it is an overload of information to the child. So you have options, explore and go step by step. You need to be brave. If you're brave, your child is brave. If you're weak, your child is weak. So it's very important. हम inspirational stories पढ़ते हैं ना, जिन लोगों ने rules तोड़े या you know एक different path आजमाया, ठीक उसी तरह हमें भी वो different path देखना है, and things will shape up in place. So do you want, anybody wants to ask, or should I continue? How does it go, Chandlata?
Poonam, I would like to ask you, means now you just spoke to me about all the 4 steps about, see, most of this is pretty new concept, you know. This is what I wanted to say. This is a very new concept which is coming US about the, you know, about handling a neurodiverse behavior. Hmm. However, we some of the parents are on phase 2, some of the parents must be on phase 3, some of the parents must be still on the phase 1. Generally, parents who just got diagnosed are still in the phase Phase one. one. So yeah, and then each of us are on different phases. So accordingly, what ma'am has given us the profile, try to try to gauge that, try to understand that. But when very important thing, I would say ki as sometimes as parents, na Poonam, as parents we understand, the parents understand, the entire group understands, but when it comes to making the grandparents understand, when it's making the chacha chachi understand, the nana nani understand, it becomes like a too much of a task. Or the blame game that goes on, you know, it must be from your mother's line, it must be from your father's line. Oh, I never had anything like that. So, you know, what is your idea about this? Because in Indian families, it is not just the mother and the father. It is the entire community, or the mother side, the father side, everybody is in. So how do you kind of, can you give us a little more insight in this? Okay. Now what happens is that एक तो joint family बहुत कम है सबसे पहले तो ठीक है. That's one. Secondly, most of the families are nuclear family. Either at least one extended member is there. That's either the grandparents are there. That too also sometimes they are not. One, you need to understand that कि जब आपने बच्चे को स्कूल में डाला तब आपने किसके डिसीजन मेकिंग पर आप कर रहे थे. That's one. जब पर्टिकुलर इशू आता है तब सब लोग जब बोलते हैं, राइट, सो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जब सब बोल रहे हैं तो हमें किसकी सुननी है. हेल्प आपको सबसे लेनी है, बट एवरीबडी इज नॉट विलिंग टू हेल्प यू. दे आर मोर इनटू द ब्लेम गेम चल रहा होता है उस वक्त, राइट. सो दैट इज व्हाई आई सेड दिस प्रोग्राम हैज टू बी टेकन अप एंड फॉलोड बाय बोथ द पेरेंट्स. जब तक दोनों स्पाउसेस साथ में मिलके you know नहीं करते हैं इस work together, Clay, definitely it will not be handled. See, the it's like, you know, mother cannot say too much to the father's side, and the father cannot say too much to the mother's side. So who has to handle? Both of them have to handle their own parents, right? So similarly, जब हम group therapy या family therapy करते हैं, this is a part of family therapy, right? In family therapy, it is very difficult to handle the entire dynamics. Family dynamics को handle करना इतना आसान नहीं है, because they all say, oh, it's my grandchild, and बच्चा कर नहीं रहा है. But yes, you have to, as I said initially, मैंने बीच में बोला था कि आपको एक member के साथ work करना है. But your strength becomes more when your husband is there with you, or when your wife is there with you. So जब तक दोनों मिलके नहीं करेंगे, आपको ये डिफिकल्टी आती रहेगी. आप, इट्स लाइक, यू नो, जब बच्चा पैदा हुआ है तो अकेले से नहीं होता है, यू नो, इट्स बोथ द पेरेंट्स. Similarly, when you have a particular concern, both have to work together. But if you keep coming back and saying कि grandparent ने ये बोला, उन्होंने ये बोला, if both of them are not together, this cycle will not break. Please try and understand, this cycle will not break. That's one. Secondly, you also need to understand that कि grandparents के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चे का उनसे करवा सकते हैं. You know, I know someone wherein, you know, बच्चे mother cannot go down for the walk, so she sends the grandmother for the walk with the child. So grandmother की भी walk हो जाती है और इनकी भी, बच्चे का भी हो जाता है. The mother gets a lot of time at the home to finish the home front, and there is an bonding between the two. But yes, as जैसे आप बोलेंगे Indian scenario में बहुत ज़्यादा thought process है. See, for that you definitely need to come for counseling. I would only suggest that. But yes, at the individual forum पे that needs to be tackled in more intense manner. But हाँ, अगर हम open forum में बात करते हैं तो हमें step by step ही चलना है. And but yes, definitely without your spouse's support, it is very difficult. One of the things that has come, it needs to be addressed now is, what can you explain them what is
strength-based lens with example. Strength. You said to look strength-based. Look at child from strength-based lens, na? Yes. Now, what is strength-based lens? It is only about strength and weaknesses. Simple है वो. हम जब बच्चे को वीकनेस देखते हैं हमारे बच्चे की, हम क्या करते हैं, वो वीकनेस या जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं या जो भी उसका बिहेवियर है बहुत माइन्यूटली देखते हैं. यू नो, एक डिटेक्टिव की तरह हम उसको स्कैन करते हैं, स्क्रीनिंग कर देते हैं पूरी कि तुमने ये गलत किया, ये इसमें ये गलत किया. वी गो डाउन टू द वेरी डीपेस्ट ऑफ द थिंग. सो व्हेन यू आर लुकिंग एट ट्रेंड्स, यू हैव टू एक्चुअली लेंस इट आउट कंप्लीटली. बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स. फॉर एग्जाम्पल, माई चाइल्ड डज नॉट लाइक टू रीड बुक्स, दैट इज स्कूल बुक्स, बट ही लाइक्स टू फ्लिप ओवर थ्रू द कॉमिक्स. राइट नाउ, रीडिंग शुरू कैसे होती है? रीडिंग एकदम से रीडिंग नहीं शुरू होती है छोटे बच्चों में. अगर आप देखेंगे तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड. सॉरी. सो जब हम बच्चे की रीडिंग की बात करते हैं, you even with the younger one, which Chandlata will know about it, is that you don't ask the child to read the words. Even if the child is flipping the pages of the comic book, itself shows an interest towards the book, right? So reading शुरू कहाँ से होती है कि at least book तो उठाए बच्चा. अगर रीडिंग नहीं कर रहा है बट वो मैगजीन उठा के पढ़ रहा है या कॉमिक उठा के पढ़ रहा है, but the purpose is reading, you need to figure out the strengths. Now, strength could be something even in terms of dancing, even in simple dance. आपको चाहिए कि वो standard format में करे, but नहीं, वो एकदम basic format में कर रहा है. It could be music, it could be helping in household chores, any strength wherein it is helping the child to develop skills, जिसको हम स्किल्स बोलते हैं. एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के स्किल्स डेवलप होने चाहिए. फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं बच्चे के, रीडिंग स्किल्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स होते हैं, सोशल स्किल्स होते हैं. अगर बच्चा उतना भी कर ले, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ बेस्ड लेंसेज दैट यू आर लुकिंग थ्रू, राइट? सो यू आर नॉट जस्ट सेइंग जस्ट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट पेंटिंग, वो तो है ही है, पर उसके अलावा आपको देखना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ एरिया है जो स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है. अगेन वी टॉकिंग कंप्लीटली ऑन स्किल डेवलपमेंट पार्ट. One very important, one more important is I really like this question a lot. You know, जब सब बच्चे मिलते हैं तो मतलब सब बच्चे हैं, some children or all the children are there in the house. Our child's difference are very evident. You know, so बच्चे की जितनी भी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, और सेम ही का कोई बच्चा है तो और भी जो कंपैरिजंस होती है, मतलब see, these are some silent comparisons which are certain things that a mother also goes through. My child is not able to do this, my child is not able to do that. So that kind of a circle or the negativity which comes over a parent during those process when children are around. What do you think, Poonam, you about it? But I would like to point out, during such cases when my parents and their children have gone to native places or they've taken a vacation or something, you know, they've come back to me with a very positive feeling that, ma'am, jab ye sab bachon ke sath tha to he interacted, or he kind of, you know, he showed these positive behaviors. I was very happy to see that after therapy he's getting along with the other children, and things are happening in a positive direction. Means first I used to find him aloof, or first I used to find him too hyperactive to kind of gauge any attention or to kind of sit with any of his peers, of his siblings to play or something. But now I'm seeing that my child is sitting, my child is accepting the other partner. So, you know, Poonam, could you elaborate that the parent has this concern that comparisons are very strong when they are there with their other siblings? ये पेरेंट्स कभी खुश नहीं होते. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. हम कभी खुश नहीं होते हैं. अगर हमारा बच्चा कर रहा है तो भी हम खुश नहीं है,
वो नहीं कर रहा है तो भी हम उसमें कुछ ना कुछ देखते हैं, राइट ना। वो कंपैरिजन नॉर्मल एंड नेचुरल है, क्योंकि जब वो आपके साथ रहता है तो नहीं करता है, जब दूसरों के साथ रहता है तो वो करता है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा डिफरेंट है. यस, अगेन it all depends on how the child is feeling. Now if he's comfortable, he will do it. So either you need to understand the chemistry between you and your child, that how good is that chemistry, and why is it that he's doing it outside and why he's not doing it with you. So that fact of that why wala jo hai wo aapko hi samajhna hai, and that's will only come in with lot of observation as to and lot of talking with your child. You need to communicate a lot with your child. Try and understand the child's feelings, his emotions, why is he behaving. जब वो clues देता है आपको तो आप वो समझने की कोशिश करिए. And still अगर फिर भी वो चीज resolve नहीं होती है, then you need to seek professional help. And Then it again, will one more thing as a parent I would like to specify is that, see, whatever your fears are, or whatever you are facing at that particular moment when you're comparing your child with the other child, your child also feels it in your eyes. So sometimes I would say that I have to put a brave face for my kid, or I have to portray a very a larger picture to my child. I have to be more confident, more strong, and more high with self-esteem for my child, because somewhere or the other my child also notices the differences. yes. So That is what I would say for a parent, like, you know, for answering your question. एब्सोल्युटली. एंड जो एंशियस पेरेंट्स होते हैं वो अगर बहुत ज्यादा एंशियस हैं तो फिर पेरेंट को पहले काउंसलिंग लेनी पड़ेगी एंड बाद में हम बच्चे पर वर्क करेंगे. I would then talk as a counselor. I would not talk as a therapist then. So it's very important that कि issues हमें resolve देखना है कि खाली बच्चे के साथ काम करना है, या अगर parental concern है तो पहले उस पर काम करना है, because the purpose is to, you know, enrich and make the parent independent and not make the parent dependent on us. So we move on, which talks about there's a few more which I need to then share it with you all, which I'll run through it a little quick because this was the main one. Behavior therapy हम बहुत सादा जानते हैं इसके बारे में. या तो हम अपने बच्चे के साथ medication use करते हैं, या हम behavior modification program use करते हैं. Your behavior modification program is your, either it can be a part of your OT, occupational therapy, speech therapy, remedial program, or just behavior modification program. It could be anything. But हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी जो भी आप प्रोग्राम या जो भी आप प्लान यूज कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, it only first purpose उनका होना चाहिए to teach the child to focus. So it could be anything. Teach the child to focus on reading, writing, fine motor skills, speech, attention, concentration. The focus of the plan is to teach the child to focus. You need to make your plans in such a manner that it works. Now, sometimes जब अगर particular disorder या कोई difficulty बच्चे की बहुत ज़्यादा है, लाजमी है कि आपका goal work नहीं करेगा. Sometimes you have to go reverse. So you make a plan with your therapist and वो goals नहीं work कर रहा है, it's absolutely fine, normal and natural in the therapy process. You have to go one step back. So for example, अगर मैंने कोई goal लिया है छोटे बच्चे के लिए जहाँ पर उन्हें writing करनी है, and the child is not able to do for some reason, and he's constantly into the scribbling and, you know, tearing of paper and these kind of stuffs, and उससे और writing में वो पेन नहीं पकड़ता है, बट आपका गोल है कि वो राइट करे, वो नहीं करेगा. यू हैव टू गो बैक. सो आपको या तो स्क्रिबलिंग है, जॉइन द डॉट्स है, ये जो लोअर लेवल के स्किल्स होते हैं आपको उनसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू मूव ऑन टू द मेन गोल. Yes, there are times where you have to repeatedly doing that one particular goal for a longer period of time. Any goal that you want to achieve, any behavior or any thing that you want to achieve, it has to be done at least for 6 months. 6 months के बाद आपको रिजल्ट दिखना लगेगा. बट हमें क्या होता है, जैसे ही रिजल्ट दिखता है 6 months के बाद हम अपना गोल चेंज कर देते हैं. मत करिए प्लीज ऐसा.
6 months तो लगता है और फिर another 6 months उसको practice में और skill बनने में लगता है. So it's very important that कि आप 3-4 goals एक साथ लीजिए और उस पर work करिए. Your therapy is a baby step. It can't go fast. It is a one step by step. You need to learn the skill. The child will also need to learn the skill. अगर आपने वो skill आपको नहीं समझी है तो बच्चे को भी कहाँ से समझेगी? As I said, consistency is important. Progress requires lot of time. Therapy may depends lot of time. Now, when we say lot of time, it doesn't depend. It is subject to the child. जरूरी नहीं है सबके लिए applicable होगा. Sorry. जरूरी नहीं है सबके लिए applicable होना. It will take. It differs from child to child, diagnosis to diagnosis. Level of diagnosis differs everything. The golden rule: stop asking your child why. ये तुमने क्यों किया? उसको खुद को नहीं पता उसने क्यों किया, वो आपको क्या जवाब देगा? Why is the child running around in the house? He does not know because it's a neurological disorder. उसका दिमाग बोलता है भागो, वो भाग जाता है. उसका दिमाग ये नहीं सिखाता है उसको कि रुको. So sometimes these why questions, the child does not have an answer, and you need to walk through the road with your child. आपके साथ आपको अपने बच्चे के पेस पर चलना है, ना कि बच्चे को अपने पेस पर चलाना है. You have a tendency to walk fast. Please don't do that. The child will not walk fast. You have to go down to the child's level and उसके pace, उनकी speed और उसके healing process के हिसाब से आपको work करना है. Then you will get the solution. Mind map is something which everyone knows. This is one of the most effective technique. जिन बच्चों को conceptualization of ideas का issue होता है, जो बच्चे सोच नहीं सकते हैं ज़्यादा. So I've just mentioned that, but I'm not going to run through it. It just talks about, we all know what mind mapping is, and you can use colors, symbols, diagrams. It's like a tree, family tree जिसको हम बोलते हैं. आपने family tree बना रहे हो आप बच्चे के साथ, and आप बनाइए, and जो एक topic लेते हो आप लीजिए, and उसपे connections ढूंढिए, relationships ढूंढिए, and then you keep moving with your child, and then keep redrawing it. So if the child has made a mess in that, ask him to then arrange it properly. So that's what mind mapping helps. The main idea of mind mapping is to increase lot of creativity in your child. Another technique or the therapy, I would say strategy, is the collaborative and proactive solution. Now, what is it about? It's about emphasizing problem and solving them rather than modifying them. अब तक हम लोग थेरेपी में क्या करते आए हैं? बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम करते आए हैं. बट ये जो मॉडल है ये हमें बताता है that you need to emphasize on the problem and how you can solve it. There are certain things in a behavior which you can solve. There are certain things in the behavior which you can modify. So we work on those modifying model as well as on the solving part. But the focus of this model is solving a particular problem. Solving is something you're doing it with your child rather than for him. मैंने तुम्हारे लिए ये किया नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, या let's do it together. It has a more impact on your child than saying मैंने तुम्हारे लिए किया. Later on the child will say मत करो मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए. You know, so you need to understand that. Next, problem solving behavior is all about timing. You can't punish a child जो उसने गलती कल करी उसका पनिशमेंट आप आज दे रहे हो, नहीं. इंटरवेंशन हैज टू बी इमीडिएट. कुछ गलती करिए आज करिए, उसकी पनिशमेंट भी आज होगी, प्रेज भी उसकी आज होगी. दैट्स व्हाई इट इज प्रोएक्टिव. You need to then look at the fact of asking questions like why and when. What is happening with the child? So what is this? What are you doing? What are you doing? Nahi. Sometimes the child does not know what he's doing. He'll just say मैं ये कर रहा था बस. So you need to understand, you need to figure, you need to use a lot of questions when you're asking yourself and when you're asking the child. Language plays a very important role. आप किस तरह से बच्चे के साथ communicate करते हैं और बच्चे को कैसे समझते हैं is very important. The more you communicate with your child, the more helping process and helping of the problem will come in place. Now, very important is that जो बच्चों को अच्छा लगता है बच्चे वही करते हैं, right? That's we all know about it. But
जो उनको अच्छा लगता है और वो उनका चॉइस होता है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट ज्यादा दिखेगा. बट अगर आप उसको फोर्सफुली उनके साथ करवाएंगे तो वो नहीं होगा. सो यू नीड टू फिगर, जो मैंने स्ट्रेंथ बेस्ड लेंस बोला था आपको, इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग व्हाट माय चाइल्ड रियली लाइक्स टू डू, व्हाट इज हिज चॉइस एंड व्हाट ही एंजॉयज डूइंग. सो ओवर द टाइम आपको ये पिक आउट करना है, जिसको हम पिक एंड चूज जिसको हम बोलते हैं. यू हैव टू डू दैट and then figure out how you can use it. These are some of the ways, I'm sure everybody knows it, but I'm just throwing up few pointers, which says that one, you need to help your child to become a decision maker, give charge and sense of control. That's one. Use more of the if and then kind of questions, wherein जितना मोटिवेशन आप अपने अंदर बच्चे में डाल रहे हैं, it cannot be external motivation, it has to be internal motivation. इसके लिए हम बोलते हैं ज्यादातर कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, यानी कि जो मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स हैं, वो कम दीजिए बच्चों. मोर ऑफ वर्बल प्रेज दीजिए, मोर ऑफ ऐसे रिवॉर्ड्स दीजिए जो उसको सोशली कनेक्ट करें लोगों के साथ. You know, that can be done. So that list of rewards can be, you know, you can just get in touch and we can give it to you. That's a different, there's a hell lot of a list is available. You need to connect uninteresting activities to area of interest. हम कितनी बार बोलते हैं हमारा बच्चा मैथ्स नहीं करता, उसको मैथ्स समझ में नहीं आता है, और उसको लेकिन कुकिंग पसंद है. So आप कुकिंग को यूज करिए, उसको फ्रैक्शन समझाने के लिए, मेजरमेंट्स को. दैट इज व्हाट योर क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट. एज अ पेरेंट योर क्रिएटिविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कि बच्चे का इंटरेस्ट कुकिंग में है बट उसको मैथ्स नहीं पसंद है, तो मैं कुकिंग के द्वारा बच्चे को फ्रैक्शन कैसे सिखा सकती हूँ. एक्टिविटी जो हम डे टू डे में करते हैं, हम सॉर्टिंग सिखाते हैं. अभी हम घर में लॉकडाउन में रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने एक्टिविटीज यूज करी हैं where they have mixed all the clothes and they've asked the kids to separate them clothes, you know, in terms of pants, shirts and etc, big small. तो it all depends कि आप क्या strategy. घर में रह के हमने बहुत कुछ सीखा है लॉकडाउन में. ऐसा नहीं है कि नुकसान तो बहुत हुआ है हमारा, but we've also learned a lot. Sometimes with ADHD kids, it's very important that the activity needs to be done in a moving manner. For example, you make the child stand and do the homework. वो थक जाएगा, थकने के बाद खुद ही बैठ जाएगा वो. बट हमें लगता है अरे बच्चा खड़े होके पढ़ रहा है, बड़े होके लिख रहा है. नहीं नहीं, that's not. Some of the kids actually have the habit of running around and moving around and reading. Let them do that, because that's an ADHD child cannot sit in one place and study. वो मूव कर करके करेगा. So it's absolutely fine as long as he's studying. There's another way of, you know, कि एक बेसिक है कि कोई बच्चों को किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं, कोई बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं. बट हम रूल सेट कर देते हैं, तुम टेबल पर ही बैठो, चेयर पर ही बैठो. नहीं. If they like to do up and down, it's absolutely fine as long as they're doing their work. बट उसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि yes, आपको 20 मूवमेंट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको बैठ के काम करना है. So you need to then design it in such a manner that yes, the movement is also happening and the homework is also happening. Praise efforts over ability. हम इंटेलिजेंस के पीछे भागते हैं, बट उसके बच्चे की एफर्ट्स पर आपको प्रेज करना है. You know, that's very important. Even the child has failed, but he has made an attempt. That is more important. हम स्पोर्ट्स में कैसे बच्चे को बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं तुम सेकंड आए, बट आपने एफर्ट तो करी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है आपके अंदर. So you need to really praise the effort that the child has put in a particular activity or achieving a particular task, achieving a particular skill that he is learning. Moreover, towards the ability. हमको रिपोर्ट में ना IQ मिलता है, हम IQ देखते हैं और अरे हमारे बच्चे का IQ बहुत अच्छा है, but hello, he's not sitting in one place and doing the work. So आप high IQ का क्या करेंगे? So we need to understand the difference between IQ, the intelligence, and the effort which the child is going to put in across the goals that he or she wants to achieve. Few things we've already spoken about, but it talks about self-esteem. You need to be a detective. Again, I would say the purpose is to focus on the strength and not the weakness. Redefine success. आप अपने बच्चे के लिए success का definition redefine करिए. Success does not mean getting good percentage.
and getting good marks and getting into good college. It could be anything. What the child knows, the success. उसके लिए success क्या है वो मायने रखता है. I will share, it's just out of the box, but I'll share something. I am also into career counseling. You won't believe, I get clients, मुझे बच्चे आते हैं 10th के बाद, those who've achieved 98%, and for them they don't want to get into science, and उनके parents science के पीछे पड़े हैं, they want to go into commerce, and वो क्यों आते हैं मेरे पास ये बोलने के लिए कि मिस हमको साइंस नहीं करना है, आप असेसमेंट करिए, तब जब आएगा ना तब हमारे पेरेंट को समझ में आएगा. So we want you to communicate to our parents. So the success thing has to be defined clearly. Redefine करिए अपने बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का strength ये है, मेरी उसकी abilities ये है, मेरी उसकी capabilities ये हैं. आप उसके success को expand करिए, success को explore करिए, उसके साथ बैठ के करिए. And 10th is a long way to go. We still have 1 year, 2 years to go. Do that. Do short-term planning with your child. Now, with all this, हम बहुत कुछ reinforcement and positive and praise and strengths की बात कर रहे हैं. But please do not forget to be a parent. If you have to criticize, if you have to spot the bad behavior, do that along with a good behavior. Every time you can't give in the bad behavior. No. What is wrong is wrong. What behavior is wrong is wrong. But उसके लिए आपको certain pattern करना है, certain rules, principles आपके घर में set करने हैं, certain format set करना है, which is another part of it altogether in the behavior modification program. But this is a next step to it. Just the few red ones which you're going to talk about. Accept the child that your child is like any other child is imperfect. अगर वो बच्चा normal है but उसमें भी कुछ imperfectness है, तो my child is also just the same. Make sure you know the difference between discipline and punishment. हमें कभी कभार discipline and punishment में फर्क समझ में नहीं आता है. So that's very important. Discipline is something that helps you to move towards a better skill development or a better individual. And with that discipline format, you will likely to repeat that behavior again, and it gets incorporated into you. आप सीखते हो वो discipline से. For example, हम discipline बनाते हैं कि family lunch होगा या family dinner होगा एक साथ. That's a discipline, that's a protocol. और वो habit में आ जाता है हमारे, और हम वो इस चीज को enjoy भी करते हैं और उसको हम practice करते हैं on a regular basis पर. But punishment, हम उस चीज को punishment देते हैं जो बच्चे ने undesirable behavior किया होता है. For example, बाहर जाने के बाद किसी के ऊपर किसी को धक्का मार दिया या push कर दिया, तो आप उसको punishment देते हो कि आप अगर इस किस्म का behavior करोगे तो आपको next time mall में नहीं लाया जाएगा. But if you slap the child over there, or you scold the child in public, the child's self-esteem goes down, and it is very likely, or it is a question mark, whether the child will behave it again or will not behave it. So उसमें कोई certainty नहीं होती है. So ये punishment और discipline में आपको ये फर्क समझना है कि punishment हमेशा negative होता है और बच्चा likely है कि वो behavior कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, depending on how the child has taken the situation. But discipline is something, it's very likely that he will put it into practice and he will make it a habit of following it on a regular basis, which is moving towards a positive sign. Be careful to separate the deeds with the actions, that is the actions from the person. हम हमेशा पर्सन गलत है ऐसा मत करिए. नहीं, तुमने जो एक्शन करा वो गलत है. एज एन इंडिविजुअल यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी टैलेंटेड, बट आज जो आपने करा है वो गलत है. सो यू हैव टू स्पेसिफाई एंड एक्सप्लेन इट इन अ मोर एलैबोरेटेड मैनर टू योर चाइल्ड, ताकि उसको समझ में आए कि उसको एज अ पेरेंट ने किस चीज के लिए, गलती के लिए आपने उसको डांटा है. नहीं तो उसको लगेगा मैं ही निकम्मा हूँ. बच्चों को जब हम कंपेयर करते हैं तो बच्चों को वो कंपैरिजन में हमेशा ये चीज आती है कि मम्मी मुझे ही डांटती है, मुझ में ही कोई कमी है. So you need to keep the action and the person separate. Pay more attention to your child's positive behavior. Again, I said your strengths and weaknesses. If you're still not able to do after every trial all these practices that you keep doing it on a regular basis, पर minimum 3 month तो करिए. हम हमेशा यही बोलते हैं,
डायग्नोसिस अपनी जगह है, आपकी पेरेंटिंग, आपका सपोर्ट अपनी जगह है. इफ यू कीप डूइंग इट, if you're able to do it, I'm sure you'll be able to do wonders. But if you can't do it after 3 months, please seek professional help. 3 महीने से beyond मत जाइए, because then it becomes too late. As therapist, we tell you it's too late. It's very common, I'm just repeating the same things, but yes, one thing is that for good sake, make it fun. When you're dealing with your child, make it fun. आपने बहुत सारे साइंस नोटिस करे होंगे आपके बच्चे में, जब वो रोने लगते हैं, येलिंग करने लगते हैं, चीजें फेंकेंगे, यू नो, आप एकदम ब्लैंक लुक आपको दे देता है. that means that they are not responding to a good behavior. It is the dysregulated brain that does not learn. जब हमारा दिमाग बंद हो जाता है, तब हम सिर्फ सुनते रहते हैं. It's like, you know, somebody is telling you something and it's like a pravachan type. तो हमको कितनी बार लगता है ना, बच्चे हमें ब्लैंक लुक दे रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट. इट्स जस्ट दैट दे गो ब्लैंक इनसाइड. उनका ब्रेन जो होता है वो एक तरह से एक शटडाउन जैसा विंडो होता है, एंड वो शट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे ना ठीक से सुन पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और ना चीजों को प्रोसेस कर पाते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज दैट दे डोंट डू एनीथिंग. It's like a freeze pause kind of a thing. So that's the time, if you realize that when you're seeing it in your child, like yelling, crying, उस वक्त आप मत बोलिए. बच्चा रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, आप मत बोलिए. पहले उसको रो लेने दीजिए जी भर के. कुछ नहीं होगा, उसका गला खराब होगा थोड़ा, बट हो जाएगा ठीक. उसको रो लेने दीजिए मन भर के. फिर आप ब्रेक लीजिए and then do it. Do something that makes him happy or makes him feel good, and then come back what you want him to do exactly. So it's like changing the mood of the child and then getting him to do what exactly is required. Routines are very important. जैसे मैंने पहले भी बताया, following certain rules, rituals, routines are very important. Why it is important? Because it lowers down cognitive load. हम बहुत systematic हो जाते हैं अपने दिमाग में. Second, ये एक हमारे अंदर habit बन जाता है. थर्ड, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली आ जाता है. अब आपको लगेगा कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली कैसा आता है, बट दैट इज हाउ इट इज. सो देयर आर सर्टेन स्किल्स व्हिच यू डोंट नीड टू वर्क ऑन. यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग यू नीड टू वर्क, बट इन सर्टेन स्किल्स यू डोंट नीड टू वर्क ऑन. इट ऑटोमेटिकली कम्स इन, बच्चे में आ जाएगा वो, बट यू नीड टू फॉलो अदर थिंग्स. रूटीन करिए, स्टिक करिए, और उसको स्टिक करिए, प्रैक्टिस करिए, और रेगुलरली प्रैक्टिस करिए. थिंग्स विल गो ऑन इन प्लेस. हिज माइंड विल काम डाउन, ही विल सेटल डाउन. रूटीन्स में आएंगी चीजें. दैट इज देयर. टेक अ ब्रेक, ट्राई एंड फेल, एंड देन अगेन ट्राई. It's okay to fail, it's okay to try, and it is okay to take a break. We need to make the child understand that human beings are imperfect. Human beings are imperfect. So that's very important. I will skip this, Chandata, because that will take us a lot of time. But yes, this is more important. You need to recognize your child's strengths. Why are we talking about strengths? Because strength is something that really works. नेगेटिव चीजें वर्क नहीं करती हैं. अब ये कोरोना के टाइम पे भी हम सब घर में बैठे थे ना, तो पॉजिटिविटी ही काम करी थी. नेगेटिविटी काम नहीं करती है. तो हमें पॉजिटिव ही रहना है और बच्चे के स्ट्रेंथ्स ही ढूंढने हैं. 2-step strategies for success. Get the roots to your challenges. So अगर आपको डायग्नोसिस नहीं समझता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, please seek professional help. They will explain it to you, and you need to understand that properly, rather than just ऊपर से समझना. ADHD है, हाँ ठीक है ADHD है. ASD, autistic spectrum disorder है, बस है नहीं. उसके अंदर strength and weaknesses भी हैं, आपको वो भी समझने जरूरी है. Your child feels out of control, give him the charge. Very important, give him the charge. Your child is worried about school, create positive incentives at school and at home front. Now, how do you do that? Now, school में अगर बच्चे को कुछ positive incentives मिल रहे हैं, for example, आपने क्लास टीचर के साथ बात करके रखी है, और आपके टीचर को भी पता है और आपको भी पता है कि बच्चा थेरेपी के लिए जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल टीचर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जो उसको बहुत अच्छी लगती है, and that is given in the first period, and that will motivate the child
to go to the school in the morning, which the child will say, no, I will not skip because teacher ने मुझे जिम्मेदारी दी है सब बच्चों के साथ ये चीज करने की. So that motivation जो होता है, the incentives बच्चे को मिलेगा स्कूल में. So you need to club that together, home and school. So बहुत बच्चे जो cranky होते हैं ना सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए, आपको अपनी टीचर के साथ बात करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि वो थेरेपी के लिए जा रहा है बच्चा, एंड ऐसा ऐसा है, उसके सुबह का प्रॉब्लम है. You need to handle each situations very differently, and then encourage the teacher to give him some responsibility which the child loves to do it, not after the break but in the morning. So that encourages him not to to go to school in the morning and not miss it. So you need to identify the positive incentives. कैसे आप link करोगे home and school, and I'm sure your child will move towards it. Strategies आप definitely अपने therapist से ले सकते हैं, और बहुत सारी strategies हैं. Your child acts out or blurts out in class. बहुत से बच्चे होते हैं जो फिजिटी हैं, रेस्टलेस हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है. ज़रूरी है कि उनकी एनर्जी पहले निकले, excessive energy. I remember when I was doing therapy with one of the, I would say a third standard boy, and उसको hyperactivity के बहुत ज़्यादा issue था. तो मेरे सेशन में आने से पहले मैं उसको पहले तो 10 राउंड भगवाती थी. I used to make him run for 10 rounds, 10 simple rounds होते थे, क्योंकि मेरा सेशन एक स्कूल ने हमें ऐसी जगह दी थी कि my session was just outside the open terrace. So I used to make him run 10 times up and down उसी एरिया में, and वो जब थक जाता था तब मैं उसको बैठाती थी और फिर क्रिएटिव एक्टिविटी कराती थी for 30 seconds to or maybe one sheet which was for 5 minutes, and then I would go on to the behavior aspect because I was dealing with anger management. So that's how I divided my time of 45 minutes with that boy. So 10 minutes of running, 5 minutes of fun activity which he likes to do all the time. So my 15 minutes goes, so 30 minutes was my constructive activity. और एंगर मैनेजमेंट की, हमको कैसे एंगर को हैंडल करना है अपना घर में भी और स्कूल में भी. सो reframe the behavior in a positive light, like blurting out, hold on and talk after the class. So sometimes बच्चे बहुत जोर से चिल्ला देते हैं या blurt out कर देते हैं. So either you have to help them कि अगर आपको कुछ बात करनी है तो use this card particularly. All these things work with your teacher. It works with the teacher. Where it's difficult at times, school teachers nahi sunti hain, very normal typical scenario, but yes, it can work. It can work. It's not that it cannot work. It can work. So that's there. Kids refuse to do their homework. Now, accepted, it's a weird behavior. So you need to know that कि टेबल चेयर पे बैठ के ही नहीं होमवर्क करेगा. अगर वो वहां पर जहां आप किचन में काम कर रही हैं और वहां वहीं पर ही लेट के वो करना चाहता है तो प्लीज करने दीजिए उसको. But that condition has to be put in place that if you're doing it here, it has to be done in 30 minutes. So it takes time to put certain rules in place. जैसे मैंने बोला है, it's not experimenting with your child, but yes, you need to put certain rules in place. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आई नो किड्स जो मैथ्स का एग्जाम है, उनका बोर्ड एग्जाम है और एक दिन पहले मैथ्स का प्रैक्टिस करते हैं बाय लिसनिंग म्यूजिक. There are some who've been watching cricket matches and doing their math sums, solving their math sums, and next day board exam है. So हर बच्चे का, जैसे मैंने बोला, उनका लर्निंग स्टाइल, उनका टीचिंग और आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो अलग होती है. सो लर्निंग स्टाइल बच्चे का समझना बहुत जरूरी है. ऑडिटरी है, विजुअल है, मूवमेंट है, या कैसा है उसका, वो बहुत जरूरी है. Your child does not respond to consequences. Very common, बहुत कॉमन है ये कि हमारे बच्चों को अब हम पनिश कर देना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. Use passion in purposeful way. Or jobs like cooking and gardening. आपको combine करना पड़ेगा कि उसको क्या पसंद है. Accordingly, you need to put things in place. अगर consequences है तो वो ऐसी चीज करे जो उसको नहीं पसंद है. Punishment, hitting, shouting, all these things now don't work. So you have to use these kind of things where it is skill development is happening. Your child has trouble making friends, which is a very common thing. My kids don't play. My kids don't have friends. They are not social. How do we do that? You actually need to have friends come over and who have common interest.
3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चों के साथ कंफर्टेबल है, बट वो तीनों बच्चों को ड्राइंग पसंद है, आप तीनों बच्चों के साथ ड्राइंग करिए. That is more important. Not that how many are, the quantity is not important, the quality is important. So those kids need to have common interests, shared interests. So if they like music, they are into music together. That's there. But yes, every problem, every challenge has ifs and buts. But what you need to focus is lot of power of positivity. Positivity से बहुत फर्क पड़ता है and things really work. Negative तो होता रहता है, तो I completely believe that you need to be positive. That's the last one which I'm saying. If you've not done anything till now, or you've done even a part of it till now, one, you need to have your psychoeducational assessment in place. You need to have your IPs in place. You need to have multidisciplinary approach going on, depending on your diagnosis, depending on your disability, and depending on your plan. Consistency बहुत ज़रूरी है at both ends पर, school and home. Complete liaison and communication with your parent teacher के बीच में होना चाहिए about the IP or any kind of therapy program. Parent and teacher development program आपको भी सीखना है. Just because हम parenting जानते हैं, ये therapist का काम है, नहीं. अगर आपको work करना है, आपको investment डालना पड़ेगा बच्चे में in a special way. Now this special way is a training program. There could be specific skill development programs which you want to do and you don't know and you want to learn. So you take that course in place. There are a lot of free online courses, so you can do that as well. A lot of reading material is there, so that can be done. Medication and therapy go hand in hand. Both are very important. Depending on the case, we need to figure out कि medication कितना देना है, therapy कितना देना है. You need to help your child to give him or her the opportunity to take charge of his life. Okay, I think that someone's raised their hand. I don't know why, but I think Chanlata can look into it. And it's a disability problem and not a behavior problem. So that's there. And your plans have to be smart enough. As I said, specific, measurable, attainable, realistic or relevant and timely. So it will take time to achieve. Your plans will take time to achieve. That's there. I'm done for the day. I know I was a little fast, but I'm able to, I think I've done the best that I could.